कि हमारे यहाँ पर फॉरेन से कोई स्टूडेंट आया है सीखने के लिए, और वो भी अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लेडीज़ हमारे पास ट्रेनिंग लेने आए हैं। ये साउथ अफ्रीका से आए हैं और इनका नाम है एंडी लोवू, है ना? एंडी लोवू, Love. स्पेल इट। NGLOVU. हाँ, लोवू। और सक्सेस। ओके। सो वो साउथ अफ्रीका से स्ट्रेट अवे यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं मदरबोर्ड रिपेयरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम आपको शॉर्ट सर्किट सिखा रहे हैं, साथ में इन्हें भी हमें सिखाना था, ट्रेनिंग देना था। आज दूसरी दिन की ट्रेनिंग है, ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, आए हैं यहाँ इतनी दूर ट्रेनिंग लेने के लिए। सो आज हम वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शॉर्ट सर्किट वाली चीज़, जो मदरबोर्ड जिसमें नो इंडिकेटर का फॉल्ट हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। यू जस्ट टेक दिस कैमरा एंड शो वेर एवर आई शो, एंड व्हेन I am placing some probe, you have to show the probe also and meter reading also at the same time. Okay. So अभी हम इसको सबको निकाल देते हैं जो हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा आइटम्स पड़ी हुई है, ताकि काम करने में आसानी हो। Keep this in that thing, cover. Okay. Yeah. ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो नो इंडिकेटर का फॉल्ट होता है उसमें फॉल्ट कहाँ पर है, कैसे पहचानें। इतने सारे सामान हैं। आज हमने एक वीडियो बनाया नो इंडिकेटर का फॉल्ट में रैम ख़राब निकली। क्यों? सोनी के बोर्ड में हमने देखा था अभी, उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें रैम ख़राब निकली। तो हमने रैम डाली तो सोनी का लोगो आ गया, बट वो सोनी पे ही रहा बिकॉज और भी रैम्स ख़राब थी उसमें। तो हमें सभी रैम्स बदलनी पड़ेगी। तो उसका सेकंड पार्ट भी मैं डालूँगा उसके बाद। अभी तो फर्स्ट पार्ट मैंने जस्ट रिकॉर्ड किया है, उसे एडिट करके अपलोड करना बाकी है। ठीक है। और यहाँ पे आज ये शॉर्ट सर्किट का दूसरा मामला है हमारे पास। ये बोर्ड एक्चुअली व्यू का बोर्ड है जो लगा हुआ है इन विच कंपनी, दिस बोर्ड Hisense. हाइसेंस। ओके। सो ये व्यू के ही बोर्ड है, बहुत सारी कंपनी यूज़ करती है इसको। Orientation So is no. you just keep it like this, so orientation problem will not come. Okay. Orientation means 9 is to 16 or 16 is to 9. Okay. Okay. You keep this there, uh, in corner. Okay. Take this. First we have to see that which voltage is which line. For that मैंने एक्चुअली फाइंड आउट किया है कि कुछ तरीका है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो कॉइल है L29, ओके, यहाँ से सप्लाई आ रही है उसकी। ठीक है, 1.8 वोल्ट वाली। और ये है 3.3 वोल्ट लाइन। ओके, जो कि हमें कहाँ से सप्लाई आ रही देखने के लिए हम देखेंगे कहाँ से आ रही है। ओके। सो यहाँ से ये एक मॉसफेट है जो स्विच करने के लिए रखा गया है। 3.3 वोल्ट को जब ज़रूरत हो तभी देना है, जब ज़रूरत ना हो तो बंद रखना है। तो हम देखेंगे कि ये 3.3 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं एक्चुअली। ओके, एक्चुअल एरिया कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गई इसकी कॉइल, तो यहाँ से आ रहा है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है ये लाइन कोई जो कि स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट है।
इसके बिना नो इंडिकेटर का फॉल्ट ही आएगा, बिकॉज ये अगर जो लाइन ख़राब है तो प्रॉब्लम नो इंडिकेटर का ही रहने वाला है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर रीडिंग क्या बता रहा है। ये अभी ओके है। और ये रीडिंग क्या है देख लेते हैं। ये 3.3 वोल्ट स्विच है जो कि लो रीडिंग बता रहा है, ठीक है। सो अगर जो आप चेक करना हो कि कहाँ पर जाके ये 0.030 बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस जगह पे सप्लाई देनी पड़ेगी। या तो हम सप्लाई दे के ही देख लेते हैं। तो हमारे पास पावर सप्लाई सब कुछ ओके ही है हमारा इसका। तो हम कनेक्ट कर देते हैं पावर सोर्स और चेक करते हैं कि ये सॉर्टिंग कहाँ जाके हो रही है। ओके, अगर जो प्रोसेसर की है तो प्रोसेसर निकाल कर चेक कर लेंगे। हमारे पास मशीन भी है चेक करने के लिए। तो देख लेते हैं पहले चीज़। ये नो इंडिकेटर में है एक्चुअली, वो इंडिकेटर लाइट का कनेक्शन नहीं लाए। कोई दिक्कत नहीं है, इंडिकेटर लाइट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम वैसे ही बता रहे हैं आपको। अब देखो वोल्टेज टेस्ट करना है पहले। मैंने बताया जैसे कि ये 3.3 वोल्ट लाइन है, तो मैं पावर दे देता हूँ और चेक कर लेता हूँ 3.3 वोल्ट यहाँ पर। वोल्टेज यू आर नॉट शोइंग इन दिस मीटर, 3.29। ओके, सो ये वोल्टेज रीडिंग तो ओके है। जस्ट आई मेक वाईफाई ऑन 1 मिनट। Wi-Fi is not there, then result not will not clear. be good. Clarity goes not okay. Okay, so we'll check the voltages. देखो इनपुट साइड में सॉर्टिंग नहीं है, तो इनपुट साइड में ये रीडिंग है और आउटपुट साइड में सॉर्टिंग यहाँ पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखो रीडिंग 3.3 पूरी आ रही है। और जो स्विच है, स्विच होके आ रहे हैं वहाँ पे 3.279 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कंपोनेंट तो ज़रूर गर्म हो रहा होगा, बिकॉज ये लाइन बहुत लो बता रही है। तो मैंने देखा तो प्रोसेसर शॉर्ट लग रही है, बिकॉज ये हीट हो रही है। तो हमारे पास टेम्परेचर टेस्टर है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। नाउ शो दिस रीडिंग ऑन, नो, या This one. या so 77 degrees means 77 overheating this processor. So this processor is culprit component in this board. इसका कारण ये है कि ये प्रोसेसर की वजह से ही ये नो इंडिकेटर में है। इसमें सॉफ्टवेयर का इश्यू नहीं है, रैम का इश्यू नहीं है, कोई सप्लाई का इश्यू नहीं है। अब देखो अगर जो आपको यही चीज़ पता नहीं है डायोड टेस्ट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो फिर आप फेल हो। आप बहुत सारे कंपोनेंट निकाल के भी आप कोई बोर्ड को रिपेयर करके या नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, जब तक कि आपको डायोड टेस्ट की परफेक्ट रीडिंग सभी लाइनों की ना पता हो। ओके, किस लाइन की डायोड टेस्ट रीडिंग कितनी होनी चाहिए। और हमेशा डायोड टेस्ट रीडिंग लेने के टाइम प्रोसेसर को ठंडा करके ही लेना चाहिए, बिकॉज एक्यूरेट रीडिंग तब आएगी जब ठंडे प्रोसेसर में आप लोगे। तो ये एक रेफरेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरे मदरबोर्ड में जब आपके पास सेम दूसरा बोर्ड आता है, तो वो रेफरेंस की तरह डायोड टेस्ट की रीडिंग को चेक करो कि क्या वो सेम है या नहीं। तो हम पावर बंद करके सभी रीडिंग लेंगे। ओके, सब लाइन की डायोड टेस्ट में मीटर को रखना है और सारी रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रीडिंग बता रहा है ये भी काफ़ी लो है, तो इसमें प्रोसेसर की दूसरी जो रीडिंग है वो भी लो है, लेकिन ये चलेगा। लेकिन ये तो माफ़ी के योग्य नहीं है, 0.029। ये तो 3.3 वोल्ट सीधा सीधा शॉर्ट बता रहा है। ओके, जो ईएमएमसी में जा रही है और प्रोसेसर में भी जा रही है, लेकिन प्रोसेसर से शॉर्ट हो रही है, ईएमएमसी से नहीं। तो ये इस तरह से हम शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमें शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करना होता है तो हमें वो हीटिंग वाला कंपोनेंट पता करना होता है जिसके थ्रू वो चीज़ ग्राउंड हो रही है, ठीक है। देखिए अगर जो पीएफ कोई ग्राउंड हो रहा होता है तो आईसी प्रोसेसर गर्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ तक वोल्टेज पहुँचता ही नहीं, उस पीएफ से ही ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड होने वाला जो कंपोनेंट है वही गर्म होगा। तो यहाँ पर ये ग्राउंड हो रहा है आईसी 3.3 वोल्ट लाइन से, ठीक है। तो हम आईसी निकाल कर चेक कर सकते हैं कि आखिर आईसी निकालने के बाद यहाँ जो रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग क्या
चेंज होती है या नहीं, ठीक है। अभी जो बता रहा है आप यू जस्ट फुल मीटर, ओके ओके 0.028 है, याद रखिएगा इस लाइन की। हम प्रोसेसर निकाल के फिर आपको बताएंगे क्या रीडिंग आता है, ठीक है। तो हम इसके लिए केबल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और डिस्चार्ज कर लेंगे मेन फिल्टर को, ओके। और इसे हम यहाँ पर रख देंगे आईसी निकालने के लिए। ऑपरेशन मोड का यूज़ करेंगे बिकॉज जो प्रोफाइल हमने रखी हुई है वो अब परफेक्ट है। लेज़र लाइट से पता करेंगे प्रोसेसर अभी बॉटम नोजल से कितनी दूरी पे है और उसको परफेक्ट अलाइन करेंगे। तो ये अलाइन, ओके। और बाद में ये सारे स्क्रू टाइट कर लेंगे जिस पे हमने मदरबोर्ड को रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद लेज़र लाइट का काम वहीं तक था, ये लाइट भी बंद कर देते हैं और प्रोसेसर निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अभी भूल रहे हैं वो है बीजीए पेस्ट, ओके। इसे लगा देना है, वरना अगर जो ये नहीं लगाओगे तो प्रोसेसर के बॉल्स ड्राई रहेंगे और निकल नहीं पाएगी आईसी, ओके। और स्टार्ट बटन पर वैक्यूम को पहले ही चेक कर लेना है, वैक्यूम काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। वैक्यूम बटन यहाँ दे रखा है उसका, ओके। एंड ये होल दे रखा है इसमें जिससे आईसी चिपक जाएगी। होल बंद है, वो खोल दोगे तो आईसी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ये हमारे पास एक आईसी है, ओके। अभी मैंने देखो होल को बंद कर दिया है, ठीक है। ये आईसी को अच्छे से पकड़ लिया है और ये छोड़ दिया मैंने। ये होल बंद करने से पकड़ के रखेगा, होल खोलने से छोड़ देगा, ठीक है। वेरी नाइस इक्विपमेंट विद कमिंग विद दिस मशीन। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मशीन का पूरा वर्किंग, बिकॉज इसने कभी मेरा नुकसान नहीं किया है। हाँ, मुझे ज़रूर प्रोफाइल को सेट करना पड़ा बिकॉज इसके साथ जो मशीन में प्रोफाइल आती है वो मेरी आईसी के लिए सही नहीं थी। तो मैंने मैजिक सोनी करके एक प्रोफाइल जो बनाई है वही अब कॉमन कर दिया है सभी आईसीज़ के लिए, जिससे मेरा काम अब आसान हो गया है। मैं बता देता हूँ टेम्परेचर सेटिंग हमारी क्या है इस समय पे। आप देख सकते हैं 180 डिग्री से 280 डिग्री का टेम्परेचर है हमारा टॉप और बॉटम नोजल दोनों के लिए। ये मशीन ने करीब करीब टाइम जो लेना है वो 5 मिनट का होता है टोटल टाइम मशीन बंद होने तक का, लेकिन ये जो निकलने का टाइम होता है वो 4 मिनट के करीब होता है। आईसी निकलने के लिए जो बजर बजेगा वो 4 मिनट में बजता है। 232 सेकेंड, 232 सेकेंड्स पे बजर बजेगा। How many people are right now? 29. Okay. When I pick up the IC, no, at that time you just keep here, huh? Your this camera.
Now it is just 32 seconds left. Okay, we should get ready with vacuum. Okay, and close this door hole. Okay, then pick the IC as soon as buzzer rings. Now we have to pick the IC as soon as buzzer rings. In 32 seconds over, IC out. Now we have to place this IC here. Okay, Okay. now vacuum is of no use. Close this, and now it is cooling time. Blower is on now. Here is blower. It is giving a cold air. Heating is stopped and cooling is started. Okay, now we have to check this board after this process completed. Cooling process. Here see, cooling light is on. Green light. Yes. Okay, vacuum see, green on and off means pink. Okay, so temperature we set was 280 degree maximum, and minimum temperature was 160 degree. This profile is made by me by so much experiment. One day I just sat, and for that only I used one profile. In last time it was not coming out. Then I made a changes in profile. Then used no use. This way I just experimenting on changing the heat. I got one value, and this is fixed now for all type of my dry solder ICs. Now this is cooling. Okay, if this light goes off, that means that blower stops. After that also we can make it on. Blower starts again. See, cooling light is pink now. I can still make it Okay. cooling. If I want more cooling, then Cooling, yeah. so temperature dropped from 180 280 degree to 45 degrees. 280 degree was the maximum temperature when last profile was started. Okay, how many people? 17 people drop. ओके, सो अभी हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अब ये बोर्ड को हम निकालते हैं. ठीक है, दिस इज नाउ रेडी टू चेक दैट सॉर्टेड कंपोनेंट. ओके, हमें अब सॉर्टेड कंपोनेंट जो था वो चेक करने के लिए वो टाइम आ गया. चेक कर लें वो कंपोनेंट. देखो अभी यहाँ से सॉर्टिंग बता रहा था. It was showing sorting from this place. Now see, it is 4.421. Okay, here see 420, and here it is 421. After removing processor, it is okay. That means processor was sort. Okay, this way we find which component is wrong. Though the voltage is coming, don't see that. Use my diode test reading. See, this is okay reading, but without processor. If I keep the processor here, this reading will change to 0.32. Okay, Okay. 0.0 is wrong reading here. 0.030, which was previously showing no.
was Yeah. 0.030. 0.03. Now it is 0.4. 0.4 is That means the sorting is removed. But we have to place the processor. Okay, processor to regain this board on. Okay, so processor number, we will see that what is the processor number here. Can we see it in any board? It is Hisense company's board, right? Yes. See, this is the processor. We can make the light on here, flashlight. The reading is okay now. 1 minute, let me wear this chashma. 83B. Wait. 1 minute. No, A, 1 minute. 83. MSD Oh. 6886, no? 1 minute. Let's zoom it. Because MSD 6886, okay, is the IC reading. Okay, so we have to use this IC to make this board on, Okay. but we don't have this IC right now. This IC is missing for us. Okay, now we'll take the data of this IC, because whenever this type of board comes, then I can be able to repair it. First I will see that this number data is with me or not in our डेटा. ओके, हम लोग डेटा चेक करेंगे कि हमारे पास वो डेटा पड़ा है कि नहीं. यहाँ पर what is the board number, tell me. RSA G7. देखो, सबसे शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको. पूरी ड्राइव में हर जगह जाके देखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ही चले जाओ सीधा, और यहाँ पे आप टाइप करना शुरू करो. ठीक है, सर्च में RSA G7 .820 डॉट, अभी जितना भी IC सेम टाइप का है हमारे पास. विच इज़ द लास्ट डिजिट नाउ? 9746. But we don't have 9746. Okay, so this data is missing with us. We'll see in another hard disk also the same thing. Remove this hard disk, right click, eject. Okay, this is safe to be removed. Now we'll remove this hard disk. Okay, and insert new hard disk here. This is my 2 terabyte hard disk here. Okay, here we'll see it is now red means full, complete. I have started taking data in this hard disk now. 2 terabyte is full. First we'll check in this one, RSA G7 .820 820. Okay, dot 9746. We don't have here. Okay, 9746. So in I will search in E disk now. Okay, RSA G7
dot 820 820. Okay, 9746. 9746 we don't have, so we'll keep this data for our next time use. Okay, Okay. now I will read by this programmer, because this programmer can take complete data also. Okay. I will show you it is taking full data or not. Okay, we'll remove that IC from the board. It is Toshiba's IC, Toshiba company. I will show you. So ये पास में ठीक है, ये eMMC IC है जिसे अभी हम निकाल कर इसकी डेटा को रीड करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि डेटा लाइन अब और कहीं नहीं जाएगी। एक बार निकाल दिया हमने तो यहाँ पे ओपन रीडिंग ही बताएगा सब डेटा लाइन की, बिकॉज प्रोसेसर भी बाहर है, eMMC भी आउट है, निकल गई है। इसका पिन आउट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है ये वीडियो आप सभी के लिए। जो जो लोग इसमें इसकी हॉबी रखते हैं ये रिपेयरिंग की, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है आज ये। ओके, हम लोगों को एक चीज़ तो माननी चाहिए दोस्तों कि रिबॉलिंग का जो युग टेलीविज़न के फील्ड में पहली बार मैं ही लेके आया हूँ, उसके बाद ही लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब प्रोसेसर की रिबॉलिंग मुश्किल नहीं है, eMMC की रिबॉलिंग मुश्किल नहीं है। नहीं तो पहले ये सारी चीज़ें सपने की तरह थी, किसी को मालूम नहीं था कि इसकी स्टेंसिल कहाँ मिलेगी। ये सब कुछ आविष्कार इन्वेंटेड बाय मी ओनली। चलिए, तो अभी हम जो यहाँ पे हीट रख रहे हैं वो अभी भी कॉमन है 320 डिग्री एंड 5 की एयर। ओके, दिस विल बी कॉमन फॉर बोथ द थिंग्स। ओके, रिमूविंग नॉर्मल कंपोनेंट एंड, बट वेन एवर प्लास्टिक कंपोनेंट के पास आने पर 280 डिग्री करना है। ठीक है, हिलाकर चेक करना है आईसी को, फिर उठाना है। ये पास में ले आना, अभी हिलेगा। ओके, नाउ पिक द आईसी very easily. Okay, now we'll reball it and read the data. In meantime we'll make the data sheet also. The solder we
keep this aside till we make it reball. Stencil box is there. Now pick the stencil so that I can see that. Can you? No, no. This black one. Yeah. Okay. Here is the stencil for this. Okay. यहाँ पर ये लीजिए. This is the stencil which I am using. EMMC General DDR. मीन्स इसमें DDR का भी है और EMMC की भी स्टेंसिल है. तो इसे अभी हम रिबॉल करना शुरू करेंगे. अब देखो डॉट जो है ना इसका कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है, नीचे. तो ये राइट हैंड कॉर्नर पे डॉट रहेगा. ओके. इसी को इस तरह से रख देना है. उसके बाद टेप से इसको बंद कर देना है. थोड़ा सा हिल गया है, वापस लेंगे. ओके. अभी शोल्डर पेस्ट का यूज़ करना है. we used entire paste in that. We need more. So this process we have to, मतलब हमें इसके अंदर मॉइस्चर जो है उसे रिमूव करना है पहले. ये मॉइस्चर रिमूव होने के बाद ही रिबॉलिंग होगी. अगर जो आप ये मॉइस्चर रिमूव नहीं करोगे तो रिबॉलिंग फेल हो जाएगी आपकी. ये टिश्यू पेपर आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है ये काम के लिए, ताकि इसका जो लिक्विड कंटेंट है वो सही हो जाए. देखो ये चिपके बिना जब हिलने लगे तो समझ लेना है कि मॉइस्चर इसका रिमूव हुआ. देखो अभी ये फ्री हो गई. ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे अब और अच्छे से लगा देंगे. ये हो गया इसका यूज़ पूरा को नेक्स्ट यूज़ के लिए. नाउ यू यूज़ वन थिंग. 1 minute. Down button, highlight. Okay, creating a highlight. एक्सेस पेस्ट को साफ करना है. ओके. इसके बाद हिट देना है. सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं है तो सोल्डरिंग को कम कर दिया है. बिट अब इसकी ठंडी रहे इसके लिए. ठीक है, एसएमडी गन को उठा लिया. प्री हीट करना है पहले. ये नॉर्मल है, रूटीन है, हर बार यही करना है. तो इसके बाद ट्वीज़र को इस तरह से रखना है. ओके. थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि एसएमडी गन में पूरा टेम्परेचर आ जाए. 10 सेकेंड रूल को फॉलो करना है. क्या है ये 10 सेकेंड? जब आप एसएमडी गन को स्टेंसिल पर लेके आए उस समय पे तुरंत ही 10 सेकेंड के अंदर बॉल बनने शुरू होने चाहिए. ओके. योर हैंड इज शेकिंग. Yeah, shaking. सी. Now this ball. Okay.
Okay. Now just fix the gun on the base, and we have to make it cool by spraying thinner. Okay, wait for a second, then remove the IC from the The base. stencil. Okay, now the balls are prepared so that we can take a program, read a program. Okay, read a data. ऐसा चिपका है कि हाथ से निकल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमेशा नेक्स्ट यूज़ के लिए स्टेंसिल को हमेशा साफ़ करके रखना है। साफ़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, थिनर स्प्रे करके स्टेंसिल को साफ़ करके रेडी रख लो नेक्स्ट यूज़ के लिए। ओके, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसे दोबारा थोड़ी सी हीट देनी है अभी हमें। जो थोड़े बहुत 19-20 बॉल्स होते हैं, वो सारे जो बॉल्स हैं वो भी सही हो जाए उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास वो टूल है जिस पे हम आईसी को रख के हीट मारेंगे, लेकिन पहले देख लेंगे कि कोई बॉल शॉर्ट ना हो। ओके, अब फिर से वही है, थोड़ा सा हीट देने से पहले यहाँ पर एसएमडी गन को पूरा गर्म कर लेना है। अभी देखो आपको बॉल्स हिलते हुए नज़र आएंगे। अगर ये थोड़ी भी 19-20 है तो balls will move by itself. Have you seen it? Yes. Okay, now see that your balls are at the right place. This IC is ready to get into the programmer. Okay, Okay. Now open the program. कंप्लीटली ड्राई करने के बाद ही प्रोग्रामर सॉकेट पे रखना है, वरना फ्लक्स की वजह से प्रोग्रामर सॉकेट खराब हो जाएगा। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट your programmer socket should not be dirty because of this IC's flux. Otherwise, would be the last IC which can be read on this programmer. खराब हो गया तो सो डॉट का निशान है इधर। ओके, डॉट एंड हियर इज डॉट। ओके, वी हैव टू coincide in the center. Okay, see there are 3 areas, first one this, second this, and third this. Okay, smallest IC is placed in between this IC is placed between this. Okay, so we have to place this IC here. Okay, Yes. and then close the lid. Okay, and connect the programmer. But I told you that we will read with RT809H, no? So we have the adapter Yes, sir. for this purpose. Okay, so this is the adapter which I have, but we have to make certain changes because we don't have this plate in this. Okay, Oh, okay. I have to change the plate. Okay, so that this IC can go inside, because see, this IC will not sit on this. Okay, Yeah. this is small. Okay, Make you a saw big this. one. Okay, this is small one, so I have to unscrew it and use this one in this. Okay, Okay. Oh. Yes. Comes with it. okay, unscrew this.
but copy the description with UFI box only, because we need the complete description of this IC. Okay, Okay. I will bring the tweezer. Where is the tweezer? Okay, now with the help of tweezer, remove this socket. Okay, and place this socket here. This should come like this. Okay, Okay. Scroll in. first we will read the description with UFI box, then place this IC on this. Okay, this IC can be now fitted in this. Okay, but I will take UFI box this for description. Okay, डिस्क्रिप्शन के लिए हम UFI बॉक्स का यूज़ करेंगे, बिकॉज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सेव करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया होता है. ओके, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करते हैं आईसी चेंज करते समय पता चलता है. ओके, तो हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट तो ये चीज़ को संभाल के रख लेना है, बिकॉज ये एवरी टाइम खोदोगे तो छोटी आईसीज के लिए हमारा ये जो चीज़ है, अगर जो नहीं है आपके पास तो फिर आईसी को प्रोग्राम नहीं कर पाओगे छोटी वाली, तो इसे संभाल के रख लेना है पहले. ओके, अभी हम पहले क्या काम करेंगे, देखो किस तरह से डेटा रीड किया जाता है, सही तरीका बताऊंगा आपको. ओके, सो इसे तो बंद कर देते हैं पहले और इसे निकाल देंगे, बिकॉज ये हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है. ठीक है, राइट क्लिक एंड इजेक्ट. Now we will take this hard disk which I am using as a new one. Okay, just I have started programming in this hard disk. See, only small amount of data right now. Okay, firmware Hisense company, no? Okay, so make a folder again, Hisense, right spelling. Now we'll take the Yes. board and 1 minute, I'll bring the board and write the number. See, the board number is this one, show this in my camera. Okay, RSA G7, okay, dot 820 dot 9746. Okay, I have to take this data of this caps lock on RSA G7 dot 820 dot 9746 टेस्टेड. ओके, बिकॉज इसमें फेलियर था प्रोसेसर का और ये अनटच है, तो हम डेटा को ओके समझ सकते हैं. ठीक है, प्रोसेसर की वजह से बंद हुआ है ये बोर्ड, ना कि. ओके, तो ये अब हम ले लेते हैं, डेटा की तरह लिखेंगे इधर, डेटा इसके अंदर सेव करेंगे और डिटेल के लिए फोल्डर बना लेते हैं, डिटेल. ओके, सो हमने 2 फोल्डर बना लिए. आइडेंटिफाई करके आईसी को डिस्क्रिप्शन रीड कर लेंगे पहले. ओके, सो सी दैट फर्स्ट सेटिंग, always keep in mind that setting, in setting these two should be off, otherwise your data you will lose the data from the Which IC. one should be off? Use NTFS compression method and calculate CRC for read and verify. Okay, uncheck that 2 items. Identify the IC.
Okay, after identifying, take this data with you, this much, from VCC to last. Okay, Control C and open a notepad, and in notepad you just drop it here. Okay, file, save as, description, you take the description name only. Okay, and save it in right place. Hisense tested. Okay, detail and save. Okay, for this purpose only we have taken, because see, if I have to change the IC, here you will see this 1.7 version. If it is 1.8 version, then it won't work. Okay, Okay. revision should be 1.7 while replacing the IC. And one more thing, MMC V 5.0 and 5.01. Main thing is this one, 1.7 should be seen. This data is more than it is okay, but this should match. Okay, and 2 MB, if it is 4 MB it is okay, 8 GB it is okay, but this should every time match. Okay, Okay. this is the main factor. Okay, while replacing the IC. For that reason I used UEFI box. Now I close, because I have taken the description and saved it. Okay, Okay. now I will program this IC in RT809H programmer, but this is small data, so it will be in single only, but Solar 16 GB also comes in single only. Okay, Okay. अभी ये जो 4 GB की IC है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जो आप 16 GB भी लोगे तो सिंगल फाइल ही बनेगी इस प्रोग्रामर से. Okay, now data cable connected to data cable, and in the last area I have dropped this socket. Okay, last, and pin number 1 is written here, pin number 1. Okay, now we'll take the data with RT809H programmer. Okay, smart identify. See, it is important right now. eMMC ISP, which we will take right now. Okay, data sheet. But now which program we are using with socket is eMMC. Okay, so select this and okay. One more thing, in setting, keep in mind it should not be a partial address, it should be a full chip. Okay, Okay. and one more thing, just check 4 items: user area, boot 1, boot 2 and CST, and use 1.8 volt. Okay, and okay. Now read the data. Okay, we will read it. See, if folder opens in time, then it's okay. See, now it is hang now. Okay, D firmware, Hisense, this folder, data folder, and save. Now it started reading the data, start to read user area. It takes some time, so percentage will change from 1% to 100%. Okay, till that time we'll take the data sheet of pinout. How to take pinout data sheet? Okay, I will take a photo of this. First I will drink water, Yes. so much thirsty. Actually she don't know Hindi 5% also, so I am just forced to speak in English, so don't mind peoples.
that I am speaking in English. English. This is not my favorite language, but I am using it. The situation. There is no other option available. It's 21. Oh, this is your mobile. Yours is this one. No, another mobile. This This one is is mine and this is mine. okay. Yours is this one. I Yeah, think. yeah. See, I will take the close-up photo. For this, सबसे बेस्ट आइटम क्या है इसमें मैं बता देता हूँ कैमरा में. जब आपको क्लियर फोटो लेना हो तो यू शो दिस कैमरा फ्रॉम फार अवे. Yeah. So no, Can this take way. it up. Okay, more Mm-hmm. and macro. Okay, keep the light on, and here take it 16:9. Okay, now take the photograph of the item which we have to take the pin out. Okay, this way. Taken the complete snapshot of EMMC area. Now you can see that how much clear it is. Okay, now we'll drop this photo in our computer and take the data sheet of pinout. How to take program from this IC Okay. without removing the IC from the board. Okay, for that we need data sheet. We don't have data sheet in Google. Oh. This data sheet is only available in Vinod Kenny's DAM. 1 minute, I take chasma. I need two things, chasma and head glass both. Multimeter. Okay. See, we'll keep this in that way that our programming is not disturbing. Okay, my board. This board is also needed. I keep it here. Okay. First I will take the photo. Okay, in my computer. अब देखो कैसे मैं फ़ोटो कंप्यूटर में डाल रहा हूँ. पहले A53 मेरे फ़ोन है, इसके अंदर कैमरा में जाके टेक दिस फोटो, कंट्रोल C. ओके, कंट्रोल X भी दबा सकते हो अगर जो आपको अंदर नहीं चाहिए अभी पहले तो कंट्रोल X. देन गो टू D, firmware, Hisense, this one, detail, and drop it here. Okay, this way. Now PPT I have made it ready. Okay, PowerPoint presentation. Blank. Okay, I take this data sheet now. Firmware, Hisense, this one, detail, and this folder taken into PowerPoint now. Now this pin, no, this one, third one. So in my mobile, this third one is data 0. Okay, Which so one? third one, first, second, third. Oh, the third. Okay, 1, 2, trace 3. this where it is going. So this is going into processor directly, so we are not getting any component like register in between. Okay, Yeah. थोड़ा ऊपर ले लो, वो just okay. It is zoom, more zoom, minimize it. Okay, Okay. if it is going to this register I will make arrow on this, but it is not going into register, so I will take this arrow. Okay, control C and control V. Okay, and I place this arrow
outside means after IC, okay, not inside. Mm-hmm. And go here. See, this is the same pin, no, third. Okay, I will make it big. One minute. Okay, now it is okay. See this, it is here. This track, we get data 0 here. So minimize, zoom out. Data 0. I will copy and paste data 0. Control C, Control V. Okay, and place it here. Okay. सो आई हैव टू रब दिस ट्रैक, मतलब घिसना है ट्रैक को, घिस के शोल्डर लगाना है, शोल्डर लगा के एक वायर को इधर लगा देना है। एक डेटा 0 का वायर हमें मिल गया। अभी हमें ऐसे ही कमांड का वायर ढूंढना है। तो कमांड कहाँ लगेगा मैं बता देता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रैक हमें मिल गई। अब देखो ये है, ये पॉइंट मैं एरो ले जाके बता देता हूँ, ये कमांड है। ठीक है, ये पॉइंट, ये वाला ओके। इसे मुझे ट्रेस करना है। देखो ये ऐसे करके डॉट में जाके खो गया, कहाँ जा रहा है मुझे नहीं मालूम अभी। तो मैं इसके लिए कंटिन्यूटी मोड में मीटर को रख के चेक करूँगा कि ये यहाँ पर कहाँ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये या तो R104 में जा रहा होगा या 109 में। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो गिलोड़ी कांच वाला चश्मा ले लेना है। ओके, देखो यहाँ चेक करके मैं बता रहा हूँ आपको। बोर्ड को वैसे ही रखना है जैसे उधर रखा हुआ है। 1 2 3 4 5। ओके, कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे। Just wait a minute. I हम्म, want to zoom it out. Can you Okay. start again? ओके, सी दिस वन, 1 2 3 4 5, फिफ्थ। ओके, फिफ्थ is going where? So 104, it is going here. Fifth command is coming here. Hello, Moto. ये ऐसे लोग हैं ना परेशान करने वाले, इनको पता है। सी, ओके, so I get the point here. It is coming over here, that dot, first, second, third, fourth, fifth. Okay, so एरो मेरा यहाँ पर आ जाएगा क्लॉक का। 1 मिनट, 1 मिनट। सो हियर, टेक इट हियर, या माई मोबाइल। ओके, I have to keep this arrow here to make command point. Okay, अब यहाँ से कमांड को मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दूंगा इधर आके। ओके, और यहाँ ले लूँगा इसको। तो ये कमांड का पॉइंट हो गया, मुझे यहाँ पर रख देना है एरो। ओके, अभी मैं ट्रेस कर रहा हूँ क्लॉक। ओके, क्लॉक के लिए कम हियर, वेयर इज, ओके, सी 1 2 3 4 5 6। ओके, सिक्स्थ इज क्लॉक। आई टोल्ड यू 109। ओके, so see 109 is clock. So I will take this arrow, one more arrow. 1 minute, you go there with mobile. You see in mobile only. Okay, because if you are, sorry, control C, control V. Okay,
ये अब मैं 109 पे ले जाके यहाँ पर लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा थोड़ा, और चलेगा। ये भी, इसको भी हम क्लॉक कर देंगे CLK। ओके, और इसको उठाकर यहाँ पर ले लेंगे, तो ये क्लॉक बन गया। ओके, अब इसके बाद हमें चाहिए, तो क्या चाहिए, VCC एंड VCCQ। ओके, सो आई एम सर्चिंग फॉर VCCQ हियर, कम हियर नाउ। VCCQ कैसे मिल रहा है मेरे को, देखो VCCQ इज हियर 1 2 1 2 3 4। ओके, this fourth, so it is coming here. Okay, this coil, so I have to place here or here. Okay, L29, so I'll take my chashma। देखो ये बहुत हार्ड होता है जब आपके पास प्रॉब्लम चश्मे की, हेड ग्लास की सब हो। Control V and place this here। Okay, and take a VCC from VCCQ here। Okay, Control C and take it, Control V। Okay, VCCQ has came here now। Okay, now I need VCC point। Okay, अब देखो VCC पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये और ये। ठीक है, ये सब VCC है, आपस में शॉर्ट होंगे ये। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ओके, ये कहाँ जा रहा है देखना है पहले, यहाँ जा रहा है। ओके, तो ये सब PF है ना जो आपस में जुड़े हुए हैं, 149 147 148। ओके, आई टेक इट फ्रॉम here, this arrow, Control C, Control V, and take this arrow here। Okay, left right, and take VCC from here, Control C, Control V। मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं बार बार, मैं सीधा ही इस तरह से लेके जा सकता हूँ। तो ये मैंने सारे डेटा शीट के पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये सब चीज़ लगेगी। अब मुझे चाहिए कि नाम दूँ इसको, तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Control C Control V। ओके, ये यहाँ पे ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे ज़्यादा ब्लॉक ना करेंगे। ओके, ये जगह भी नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं। ओके, 12 यहाँ रख देंगे इसको, और इसका नाम चेंज कर देंगे। ओके, नाम चेंज करके बोर्ड का जो नंबर है RSA G7.820.9746। ओके, ये मैंने नाम भी दे दिया, तो कभी भी मैं सर्च करूँगा ना तो मुझे जल्दी मिल जाएगा। ओके, ये इस तरह से। अब मैं एक और काम करूँगा, यहाँ पे Control C करके एक और न्यू, 1 मिनट, Control V, ये प्लेन भी रखूँगा ताकि मैं कभी, मेरे तो ट्रेनिंग देने का काम है ना, मेरे को तो ये चीज़ ऐसे चाहिए प्लेन बिल्कुल, और इस पे भी नाम रख दूँगा, Control C Control V। ओके, now how to take a photograph of this is PowerPoint, no? Okay. Take the photograph of this, so file, go to file। Okay, go to file, save as। Okay, then
browse. Okay, here first change this thing, save as type, take it jpeg file interchange format. Okay, then go to the destination folder where you have to save. Since okay, this is okay now, and detail. Okay, in detail pin out, I get it here, save just this one. ओके, ये जाके सेव हो गया अब इधर, और इसे भी मैं सेव कर दूंगा. ओके, फाइल सेव एज ब्राउज. ओके, इसे भी जेपीजी फॉर्मेट. ओके, देन फॉर्मवेयर हाइसेंस ईयर डिटेल एंड ईएमएमसी क्लोजअप. ओके, ऐसे करके क्लोजअप लिख के सेव कर देंगे. अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पर क्लोजअप भी है, पिन आउट भी है. ठीक है, ये फोटो है, इसको मैं जूम करके देख सकता हूँ. ओके, so I have the photo of this thing which we made it. Okay, And now the pin out. okay, pin out, and only close up. Here I can show that drop the means देखो मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं अभी. इंसर्ट शेप्स में राउंड ले लेता हूँ थोड़ा सा. ओके, और मैं इसको कलर दे देता हूँ, से फिल वाइट. ओके, एंड कीप दिस हियर, आपको बताने के लिए कि मैंने कैसे ढूंढा ये. ओके, ये इसको कलर दूसरा देते हैं, येलो. सी दिस डेटा 0. ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल V. Now I have to show you VCC points. Okay, control C, control V, control V, control V. Okay, VCC point. Okay, see, one thing, I will give the color to the, okay, Okay. red color for VCC. Oh, okay. Okay, and for data 0 I am taking white color. No, white is not looking good, so take different color. Data 0, it is pink. Okay, magenta color. Now I make a clock. First VCC queue here. Okay, first I will make the color change. Okay, color is this one. Okay, this is VCC queue. Control C, control V, control V. Okay, control V. This is all VCC queue. This is Okay, now I take command. For command I take one more color, control C, control V. If this is command point, so I take different color, yellow color. Okay, and for clock, control C, control V. This is clock point. Okay, so the clock, yellow one stop point. no, blue is Sorry. clock,
Oh. command is yellow, data 0 is pink, red is It's VCC, VCC. and nearby red is VCC queue. It is coming here actually, okay, this point, VCC and queue. also this also, which I already given it here, okay. See this track coming here, arrow is here only, okay. Yes. And command is here, but this dot comes over here, okay, Okay. and command comes here, okay. This dot here, you see this dot is coming over here, clock here. See, everything is done now, data is taken. हाँ हेलो, रीड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुल. हाँ, दुकान पे हूँ. क्या था? अरे वो हायर का 40 का बोर्ड लेके आना था. चालू चालू होता है, बंद हो जाता है स्टैंड का. ओके ठीक है. लेकिन अभी तो हो गया लेट. कल सुबह आना लेके. कल सुबह? हाँ, अभी फिर काम नहीं हो पाएगा, रख के जाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा. तू रूबरू लेके ही जाना, फिर धक्के क्यों खाने के. सुबह में कितने बजे आपको? सुबह 10 बजे आ जाओ. 10:30 10:30 बजे. ठीक है, ओके. देखिए कैसे करने का. यू नो नाउ हाउ टू टेक द पिन आउट ऑफ. I was going to practice in the house. Yeah, you have to take practice, okay. और देखो अभी मैंने जो सेव किया है ना, वो प्रॉपर सेव हुआ है कि नहीं वो भी देख लेते हैं. हाइसेंस ये वाला. अच्छा, ये डाउटफुल जो है ना, वो डाउटफुल नहीं है. मैंने इसको रीड करने के बाद राइट किया था और ये सही हो गया था. तो ये डाउटफुल को हटा के टेस्टेड ओके ही लिख दूंगा इधर भी, ओके. बिकॉज ये अभी लास्ट मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हाइसेंस का टीवी 55 इंच का ठीक किया था, ओके. TESTAT, ओके. सी, अगर जो मेरे को ये देखना हो कि ये सही हुआ था कि नहीं, मेरे को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है. देखो अभी मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ. मेरे को ही ढूंढना है खुद को ही, तो मैं YouTube में चले जाऊँगा. साइन इन करूँगा नहीं, ठीक है. कंट्रोल भी कर रहा हूँ. ये लाइसेंस भी हटा देता हूँ, ठीक है. ये डैश भी हटा देता हूँ. सर्च करता हूँ तो ये मेरा ही वीडियो मेरे को देखने मिल जाएगा. देखो इधर फर्स्ट में ही, दिस इज मी. Oh yes. Okay, this is same board 11980. See this 11980. I made it tested okay. Okay. So this board is working actually. The hardest thing is to get Though started. it is not doubtful. Get it on paper. नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी. मैं same data I wrote there, and this TV was working. It was dead first. Now it is okay. Same data, okay. So मैं क्या करूँगा? It was the same like this. हाँ, yeah. I will share this option, copy, and in copy I will keep this, okay, in detail. Okay. Control V. If I copy paste this thing no in YouTube, I will get my own video. Control V. See, मेरा ही वीडियो दिख रहा है इधर. दो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ अभी. ये देखो, ये ऐसे नहीं शो करेगा बिकॉज ये शेयर करने की लिंक है ना, ये यहाँ चलेगी, ओके. यहाँ पे चलेगी. कंट्रोल वी. नमस्कार दोस्तों, मैं सो आ गया. तो ये क्लियर है कि
हमने जो काम किया है वो सक्सेसफुल हुआ है। और नोटपैड में एक और रख देंगे। ओके, एक और नोटपैड बना के रखेंगे, कंट्रोल वी। ओके, फाइल, सेव एज, डिस्क्रिप्शन नॉट हियर, हियर, डिटेल, वर्किंग वीडियो। Okay, I don't have the video of this, but I have the YouTube link. I've saved this in my description, working video link. I will copy and paste and can see this video is there or not. Okay, Okay. directly. नमस्कार दोस्तों, मैं Okay, so this way I made repairing so easy that anybody can now take the data sheet from my DAN. Okay, Okay. सो आपने देखा दोस्तों, आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और यहाँ पर अब हम लास्ट में कमेंट पढ़ लेते हैं सभी के। सत्यम जैन ने लिखा है, हाय सर। सत्यम जैन लिखते हैं, GJB सर, योर ट्रेनिंग हैज़ ऑल्सो बीन डन आउटसाइड द कंट्री। थैंक यू सत्यम जैन, आपने इतना लिखा इसके लिए। व्हाट ही इज सेइंग, यू नो, first time from outside the country Yes, somebody has correct. came to take the training. Such a long area means how much far it is, how much time flight time, 2 hours, 3 hours, 4 plus 6, 10 hours. uh, 10. 10 hours. It takes 10 hours to come here in my place by flight. Okay, so बहुत ही बड़ी दूर से आ रहे हैं और बहुत वो लेके आए थे कि सब कुछ सीख के जाएंगे और उनकी वो मनोकामना पूरी हो रही है इधर। भरत परमार लिखते हैं गुड। उमेश पांडे लिखते हैं 100%। सत्यम जैन लिखते हैं हाय। मौली इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं हाय। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुड आफ्टरनून लिखा है, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड इवनिंग हो गया है अभी। VS नायडू लिखते हैं हेलो सर। सत्यम जैन ने लिखा है सर इज़ देयर ए नेटवर्क इश्यू। नो, नेटवर्क इश्यू नहीं है, हो सकता है कि मैंने जब देर से वाईफाई ऑन किया था इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। कश्यप लिखते हैं गुड आफ्टरनून, अब मैं गुड इवनिंग बोलने जा रहा हूँ बिकॉज गुड इवनिंग हो चुकी है। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं हार्ट इज सिचुएशन टू गुरुजी। और यहाँ पे कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिल भेजा है। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं वो, उन्होंने और एक और अलग टाइप का दिल भेजा है। मैं एक फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सर, ETDC कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपका एक पार्सल लेके आ रहा हूँ। हाँ आ जाइए। ओके, ओके। 38 नंबर सर अपने शॉप का। हाँ 38 ग्राउंड फ्लोर पे ही है, वो झांपे वाली लाइन में, गली में, कौन से? गली में है झांपा, जहाँ बैंक ऑफ इंडिया था ना उसके बाजू में झांपा है, मतलब गेट है, गेट। वो लेंसकार के बगल। नहीं, लेंसकार्ट के इस साइड वाली गली, इस साइड वाली, दूसरी साइड की गली। ओके, एक बार ऐसा होगा तो मैं वहाँ पे आके कॉल करूंगा सर आपको। अरे दो ही तो गली है नक्षत्र के, एक इस साइड जहाँ लेंसकार्ट साइड बोल रहे हो आप, और दूसरी गली वो स्टेट बैंक के सामने वाली ATM। स्टेट बैंक ऑफ में जाना है। हाँ, स्टेट बैंक का ATM है ना, उसके सामने वाली गली में। ओके। ओके, यहाँ पे रोहित कुमार लिखते हैं विदाउट मशीन वी विल डू इट विथ द मशीन। हाँ ज़रूर। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मोबाइल रिपेयर सर्विस लिखते हैं F64 IPS कार्ड प्राइस। सुशांत गिर ने, देखिए एक्चुअली F64 का मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या प्राइस है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा। सुशांत गिर लिखते हैं ISP कार्ड प्राइस। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुरुजी RT809H eMMC अडेप्टर प्राइस, वो लगभग 6000 के करीब होगा, 4 से 6000 के बीच में होता है। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं हाय
एक और ने लिखा गुड आफ्टरनून। ये आज गुड आफ्टरनून की लड़ी लगी, लेकिन गुड आफ्टरनून नहीं, अभी गुड इवनिंग हो चुका है। जयेश पटेल लिखते हैं हेलो गुरुजी, नवसारी वंसाड़ा से। और माया कैनी ने हाय लिखा है, जो कि मेरी वाइफ है। काफ़ी अच्छे कमेंट्स रहे हैं इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देख के आप सभी को ये तो पता चल जाना चाहिए कि इतनी फेमस जगह पे नहीं आए तो कहाँ आए। ठीक है, एक दर्शन करने आ जाइए। और इतने दूर से जब अफ्रीका से कोई बंदा आ रहा है, तो आपको इंडिया में रहते हुए आपके पास में कोई है तो उसकी कदर करनी ज़रूर चाहिए। और जो गोल्ड है उसको छूने के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको सब फैसिलिटी मिल जाती है दोस्तों। देखिए, बीजीएम मशीन की फैसिलिटी है, ये सीखने मिल जाता है। मैं रिबॉलिंग वर्क करता हूँ, रिबॉलिंग वर्क भी सीखने मिल जाता है यहाँ के। इतनी अच्छी जगह पे आके ट्रेनिंग लेने का मतलब मालूम है क्या है? इसके बाद आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग लेने के लिए ज़रूर आइएगा दोस्तों। यहाँ पे कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लिखा है। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल वीडियो। यस, और नॉलेजेबल वीडियो। ओके, थैंक यू दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए। यहाँ पे देखो, अभी वो जो आए थे वो सीखने लगे हैं, अभी उनको समझ में आ गया है सब कुछ। मैं सब कुछ उनको इतना डीपली समझा रहा हूँ कि हर चीज़ उनको समझ में आ रही है अब। तो आपको भी सीखना है तो मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग में ज़रूर आ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेरी मैं बता देता हूँ, अभी से ही डेट बता देता हूँ आपको कि मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग कब होने वाली है। तो आप आइएगा ज़रूर, बिकॉज इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के लिए। 1 मिनट, 1 मिनट। ओ, एक और चीज़, सॉरी। अब देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ डेट। आज देखो अप्रैल 7 हुई है। ओके, और मई के महीने में 4, 5 और 6 तारीख को है। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 4 से लेके 8 तारीख मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग अहमदाबाद में। आपको लेनी है 4, 5, 6, 7 एंड 8 की ट्रेनिंग, तो आप आ सकते हैं ट्रेनिंग में। और यहाँ पे हमारे पास एक पार्सल आ चुका है, जो कि कहाँ से आया ये पार्सल? नहीं, लेकिन फ्रॉम एड्रेस जो है ना वो तेलंगाना है ना। ओके, सो तेलंगाना से हमारे पास एक बोर्ड रिपेयरिंग में आया हुआ है, इसको कल ओपन करेंगे हम। ओके, टेक दिस। थैंक यू। तो पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं, तो रिपेयर करने के लिए हमारे पास आया हुआ है। सो अभी देख लेते हैं, अभी लास्ट कमेंट किसी ने भेजा है तो उसके बाद हम वीडियो को बंद कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े इसके लिए। 1.5 घंटे का वीडियो पूरा हो गया है। वीडियो को एंड करते हुए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट टू एवरीवन। बंद नहीं हो रहा है, क्या बात है? So, sir, can you please come and